हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं थ्योरी ऑफ दलित डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशंस के बारे में, है ना। अम्बेडकर के इसका व्यू देखेंगे इसके ऊपर। एंड देखो, अम्बेडकर का मानना था कि देखो जो दलित है ना, अ, उनके फोर्स में या फिर बोल सकते हैं उनके सपोर्ट में थे वो। ओके, तो आप भी जानते हैं। तो वो चाहते थे ना कि उनका जो दलित के बारे में सोचते थे और इमेंसिपेशन ऑफ दलित करना चाहते थे, मतलब इम्पेसाइज करना चाहते थे, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो फ्रीली कंट्रोल देना चाहते थे। ओके, मतलब दलित से, क्योंकि देखो दलित में कुछ लिमिट्स होते थे, है ना। सोसाइटी उनको एक्सेप्ट नहीं करते थे, है ना। ये चैंपियन द कॉजेस ऑफ दलित्स, है ना, and support the causes of Dalits and defend the causes of Dalits. Okay, and emancipation of Dalits. Okay, emphasizes of Dalits, आप बोल सकते हो। बिल्कुल। तो वो चाहते थे कि देखो इनका राइजिंग होना चाहिए, कॉन्शियसनेस ऑफ दलित्स होनी चाहिए। ओके, एंड देखो साथ ही हम देखें जो कि हो सकता है थ्रू एजुकेट एंड ऑर्गेनाइज के थ्रू। ओके, देन कुछ चीजें रिक्वायर थी, जैसे मोरल जनरेशन ऑफ हिंदू सोसाइटी, है ना। रीजनरेशन होना चाहिए इसका। इसमें काफी टाइम से इसमें जो मैनिपुलेट नहीं हुआ तो वो होना चाहिए। कंडीशन ऑफ दलित आर अपीलिंग फॉर द मोरल ड्यूटी ऑफ सोसाइटी। ओके, एंड देन हम देखें तो इसमें रोल रोल ऑफ स्टेट अगर हम देखें तो स्टेट को ना इमेंसिपेशन करना चाहिए दलित्स का, इम्पेसाइज करना चाहिए दलित्स को, है ना। एंड थ्रू द स्टेट अफर्मेटिव एक्शन इंश्योर करना चाहिए, है ना। देन अगर हम देखें सोशल रिसाइट्स पॉलिटिकल कंसेप्शन, तो अम्बेडकर का मानना था कि तो जो राइट्स है ना आर प्रोड्यूस प्रोटेक्टेड नॉट बाय द लॉ, बट राइट्स आर प्रोटेक्टेड बाय सोशल एंड मोरल कंसर्न्स ऑफ द सोसाइटी। ओके, सो उनका मानना था देखो लॉ, जो लॉ स्टेट है ना उसको लॉ तो मानता है, मतलब जो उसने बताया है, पर देखो सोसाइटी भी एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें दलित के बारे में, ओके, लॉ में सब इक्वल है बट सोसाइटी में इक्वल नहीं है ना। तो सोसाइटी में जो डेमोक्रेसी है ना, सोशल डेमोक्रेसी, वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है एज अ कम्पेयर टू पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। ओके, देन मोरल रीजनरेशन होनी चाहिए सोसाइटी का। एंड देखें हम तो देखो मोरल डिग्रेडेशन अगर हम देखें तो लार्ज नंबर ऑफ पीपल नॉट बीइंग ट्रीटेड इन ह्यूमन बीइंग, है ना। इसको बोलते हैं मोरल डिजनरेशन। ओके, डिजनरेशन इसको सेम अपोजिट बोलते हैं। एंड देखो सोशल रिफॉर्म्स नीडेड बिफोर द पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, मतलब सोशल रिफॉर्म से जो पॉलिटिकल रिफॉर्म है ना उससे पहले सोशल रिफॉर्म होना बहुत जरूरी है। देन अगर हम देखें अम्बेडकर क्रिटिक ऑफ मार्क्सिज्म, तो बेसिकली अम्बेडकर और मार्क्स दोनों की ही काफी ज्यादा बोल सकते हैं फंडामेंटल जो थिंकिंग है वो सेम मिलती है ना। जैसे इस आइडिया ऑन सोशल जस्टिस, लाइक मार्क्स एंड अम्बेडकर दोनों चाहते थे द एंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, है ना। स्टेट के बारे में भी दोनों का सेम ही राय थे कि स्टेट मीन्स स्टेट एक्सप्लॉइट करता है। ओके, बट देखो डिफरेंसेस कहाँ आता है। मार्क्स व्यू ऑन रिलीजन, है ना। देन मार्क्स एंड Ambedkar views are different on religion and views on the state also. Okay, so जैसे अगर हम बात करें आइडिया ऑफ रिलीजन तो रिलीजन उनका मानना है, देखो मार्क्स का कि ओपिएट ऑफ मासेस है, मतलब एक नशा है फॉल्स कॉन्शियसनेस का, फॉल्स होप का, कि मतलब अगर आपको गरीबी में हो तो भगवान चाहते ही गरीबी में हो, है ना। तो ये सारी चीजें सब गलत है। देन अम्बेडकर, बुद्धिज्म इज रिलीजन विच इज नॉट ओपिएट ऑफ मासेस, है ना। वो इस तरीके का कोई नहीं है, मतलब नशा नहीं है मासेस का उसको। एंड देखो आइडिया ऑफ स्टेट अगर हम बात करें ना, तो मार्क्स इट इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। उनका मानना यह है कि जो कैपिटल के बिहेस्ट पे बिहाफ में एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है स्टेट के द्वारा। देन अम्बेडकर चाहते हैं देखो हैज गिवन स्पेशल पोजीशन टू द स्टेट, उन्होंने स्टेट को अलग पोजीशन दी है। जैसे वो देखो क्या कर सकते हैं, सोशल जस्टिस इंश्योर कर सकते हैं, अफर्मेटिव एक्शन इंश्योर कर सकते हैं, एंड ऑफ एक्सप्लॉइटेशन कर सकते हैं। ओके, सो अम्बेडकर रोल एज अ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, अगर हम इसके बारे में बात करें ना, तो जैसे चीफ आर्किटेक्चर उनको माना गया है, मॉडर्न मनु भी माना गया है ना, चीफ आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एंड गिवन अ चांस, उनके द्वारा कुछ बताया गया था या बोला गया था, आप बोल सकते हैं इसे। देखो
given a chance, I will be the first person to burn the constitution. ऐसा क्यों बोला उन्होंने? इसके बारे में हम जानते हैं, क्योंकि देखो इसमें ना जो उनके द्वारा बहुत सारी चीजें थी वो एडिट नहीं की गई थी। जैसे वो चाहते थे प्रेसिडेंशियल जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए ना, रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन होना चाहिए। देन वो सेपरेट इलेक्टोरेट भी चाहते थे, तो ये सारी चीजें नहीं हुई। ओके, तो उनके जहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो रिफ्लेक्ट करता है विजन ऑफ नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना, मौलाना आजाद, ओके, राजेंद्र प्रसाद, इनके इनके भी व्यूज रिप्रेजेंट करता है, नॉट ओनली अम्बेडकर। ओके, so Ambedkar says that a separate electorate and president form of government, okay, तो ये सारी चीजें चाहते थे। बट देखो जो मोर्ले मिंटो जो रिफॉर्म आया था ना 1909 का, उसमें क्या था ना, पार्लियामेंट के सारी चीजें, पार्लियामेंट्री कैसे चलना है, ये सारी चीजें जान गए थे। ओके, तो प्रेसिडेंशियल जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना, एक ये मुश्किल था समझना, इतनी जल्दी आसान भी नहीं था। तो इसी वजह से पार्लियामेंट्री जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना, ये सब कुछ चलाया गया है। आर्टिकल 14 18 एक्सेप्ट किए गए कॉन्स्टिट्यूशन में, जो अम्बेडकर द्वारा दिए गए थे। Then idea of constitution. Ideology of constitution is grounded in the inalienable rights of the people. Okay, like जो constitution है, constitution क्या है? Basically अगर हम देखें तो लिमिटेड गवर्नमेंट होना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स होना चाहिए अंडर द आर्टिकल 32, है ना। अगर उनका कोई वायलेशन होता है तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, डीपीएसपी होनी चाहिए, है ना। तो ये ग्राउंडेड है इन एलिएनेबल राइट्स के, पीपल्स के। ओके, ये कॉन्स्टिट्यूशन है। देन अगर हम देखें Ambedkar's theory of Dalit democratic revolution, so champion the causes of Dalits, and condition of Dalits cannot be improved without the fighting of their regeneration. And Ambedkar said that Indian society is on verge of collapse. It will be dangerous to postpone their moral regeneration. Okay, so moral regeneration of the Indian society will be the possible only through the most oppressed section of Indian society. Then basic structure of Indian society is ideological, not economic, and the basic nature of Indian society is driven by the ideology which advocates exploitation. That's why state can work for the condition of Dalits. Okay, so Ambedkar preferred a state-led affirmative action, and he also tried the rise of consciousness of Dalits because Ambedkar believed that the condition of Dalits would not improve without having subjective awareness and about their objective reality. Ambedkar's method for rising consciousness of Dalits was to educate and organize. Yes, then Ambedkar's idea of social precedence and मतलब presiders, okay, and political construction. Then अगर हम देखें तो rights are protected by the social and moral conscience of the society. Only when society accepts a particular right given by the state, then it can be successful. For example, a law made by state will never be successful if it is not accepted by society. Then social relationships are an important part of the democracy. That is why social reforms must precede political and economic reforms. Okay. Then, in Ambedkar's work, social democracy means a way of life which accepts liberty, equality, fraternity as a principle of life. Then, Ambedkar also believed that the economic and political issues must be resolved only after achieving the goal of social justice. Hmm. Then, political emancipation should be besides social emancipation because it may lead the dominance of upper caste Hindus. You know. Then Ambedkar's critique of Marxism. Ambedkar was greatly influenced by Marx because idea of social justice and was primarily aimed to ending exploitation of the poor. And however, significantly departure can also be seen between the viewpoint of Ambedkar, Marx, because Ambedkar's belief in the idea of Marx are not very relevant in the Indian society context. है ना? India faces different types of challenges. That is, uh, Ambedkar significantly different from Marx in the following manner: that Ambedkar's different from Marx view of on religion. Okay, for Karl Marx, religion is an opiate of masses, which is used to generate false consciousness, and it is also an instrument of exploitation. Whereas Buddhism for Ambedkar is a religion which is
based on upon the conception of samta. It means equality, karuna, compassion. Okay. Buddhism is a religion which treats people equally. That's why Ambedkar advocated that untouchables should embrace Buddhism. Then Marx's view on the state were another different point between the Ambedkar and Karl Marx. According to the Marx, the state is an instrument of exploitation and it works at the behest of capitalism. Whereas for Ambedkar, the state occupies a special position in his scheme of things. Then Ambedkar says that the state is necessary for ensuring following, that is, ensuring social justice, affirmative actions, and for ending the exploitation of society. है ना? Then Ambedkar's role as a constitution maker. Ambedkar is considered as a chief architect, and also called a modern Manu. Okay, but Ambedkar himself said that I did not play an important an instrument role in the making of Indian institution. In fact, given a chance, I will be the first person to burn constitution. ये सब चीजें ना क्यों कहा कि देखो उसमें India the constitution no, does not have reflect the vision of ideology of Ambedkar. Rather, it reflects the ideology and the vision of great other great personality of the modern India like Nehru, and Maulana Azad, Sardar Vallabhbhai Patel, Rajendra Prasad. Okay, many of the prominent ideas which Ambedkar advocate could not find a place in the Constitution of India. Those ideas are Ambedkar want a separate electorate to be included, which are rejected, and instead of separate electorate, reservation was given to the scheduled caste and scheduled tribes. Then Ambedkar wanted a presidential form of government, but parliamentary democracy was incorporated under the constitution because Indians knew about the working of parliamentary democracy since Marlow sorry, Parliamento reforms 1909. That is why parliamentary democracy was preferred over the presidential form of government. Okay. Then, nevertheless, many of the ideas of Ambedkar were incorporated under the Constitution of India. And for example, right of equality was granted to the people under the Article 14 to 18. Okay. Then, concept of constitutionalism refers to the limited government, rule of law, regulation, and democratic values. है ना? ये हम अम्बेडकर एंड कॉन्स्टिट्यूशनल के बीच में हम देख रहे हैं लेकिन देखो India was pivotal during the India's freedom movement and significantly shaped by the leaders like Nehru, Ambedkar, and Ambedkar believed in evolutionary nature of the constitution and emphasizing its adaptability to change times. He critiques the government of the India Act 1985 for lacking true federal spirit and favor democratic political world, whereas the Public Opinion Act as a tool to restrict government power. And Ambedkar advocated for a democratic principle and demonstrated in his support for free votes and elected free representation over the nomination. He opposed bureaucratic control of society, advocating for democratic control of the bureaucracy. Okay, within a representative democracy. Then he viewed democracy as essential for constitutionalism, emphasizing that pupils is a consent in is a crucial for making of the constitution. Parliamentary democracy with a separate of you know, or constitutional morality was central to Ambedkar visions for India, and he advocated fundamental rights and DPSP, directive principle as a mechanism to limit government authority. Hence, Ambedkar's contributions to constitutionalism, including adaptability, democratic control, and the importance of parliamentary democracy and fundamental rights, have left a lasting impact on in India's governance and continue to shape India's constitutional framework. Concluding remark: Ambedkar है often portrayed as a leader who upheld the partition because of the untouchables, है ना? Due to which Arun Shawari in his book Working Worshipping False God has called Ambedkar anti-national. Shawari argues that Ambedkar is emerging as a leader of the community rather leader of the nation, and Ambedkar himself held that between the interest of Dalits and interest of nation.
He would give preferences to the interest of Dalits. Then such partisanship was grounded on the body of thought, and India built a defensible argument which he very ably and effectively deployed. However, according to the Arundhati Roy and Kishopi Jeffrelot, it would be wrong to call Ambedkar as an anti-national. Ambedkar represents the largest section of Indian society, Bhujan Samaj. Then a person representing a larger section of the nation cannot be regarded as an anti-national. Okay, so on the status of India as a national, Ambedkar approach was a practical as the Jyotibai Phule. Okay, उनका नाम तो आपने सुना ही होगा ज्योतिबाई फुले. It was difficult for Ambedkar to accept society divided into cases and castes as a notion in the concept of nation. According to Ambedkar, it is based on trinity of liberty and fraternity and equality. There can be no nation without this trinity Trinity. However, it does not make mean that there was no desire in Ambedkar's that India should not emerge as a nation. Okay, so कुछ क्वेश्चन है इसको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, है ना? तो वीडियो को पॉज करके आप इसको देख सकते हैं. तो गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. थैंक यू सो मच.